Good morning, everyone. We have to wait for a minute because this is an recorded lecture. So this recorded lecture cannot be so big. So it will be in small durations for half an hour. So we'll be recording only a few sections of it, and then I'll be deporting it, and you just watch it. You just watch it, and because of that, I have to take. So before starting our lecture, so let us talk about let us talk about An Academy. So welcome you all to An Academy. Okay, so you see, crack all UPSC civil service optionals with India's largest learning platforms. So get the subscription of it. So once you get the subscription of it, you see what you will get benefit. What are the benefits which you will be getting after subscribing? You will get daily live classes, and with these daily live classes, you will be chatting with the educator. You'll be engaging with discussions. You'll be asking doubts and answer poll also. That means all things is benefiting you for your benefit. You see structural courses, you see in when we say about this Unacademy, so it provides more than 15,000 plus courses which are structured systematically. Then live test and quiz. Yes, I am organizing the live test and quiz, and this quiz is only and only to evaluate the performance of the learner. This quiz is only and only to evaluate the performance of the learner. And you see, when we say about unlimited accessibility, so in unlimited accessibility, you see, if you fail to get daily live classes, you will get recorded class, and that you can watch it anytime, anywhere of any faculty. You can download this app on Google Play, and with this Google Play, if you download it, you'll get it everything. Now you see about me. I have completed my graduations from Calcutta University in science subject, and I am acting as a mentor of UPSC Civil Service for last 11 years and so in public administrations, polity, governance, and few more subjects. I have appeared for UPSC Civil Service interview twice and have served many reputed IAS coaching institutions at Delhi and many more states. Under my guidance, many aspirants have cracked UPSC as well as many state level exams too. This is, you see, along with me, there are top 100 educators. Along with me, there are top 100 educators. Along with me, there are top 100 educators. And you see, these top 100 educators are there to nurture you to fulfill your goals. And in this, you can see in these slides the name of few top educators in front of you. Then you see, as I said, that UPSC provides comprehensive syllabus, so it provides more than 15,000 plus courses. And when it provides more than 15,000 plus courses, you see polity, governance, IR, geography, science and technology, NCRT, history, optional courses. So as I always says, we'll be focusing on optional courses here: environment and ecology, art and culture, current affairs, Indian economy, many more, means many more things you'll get, and a few of them I have just explained it here. Given now, as you know that Unacademy provides two types of courses, that is plus courses and iconic courses. So once you say about this plus courses, so so much syllabus you cannot complete in 1 month, 3 months, or 6 months. So it's better to get the subscriptions of 12 months. So once you get the subscription of 12 months, that is 49,500 you have to pay. And if you apply my promo code MDYT, you see this is my promo code. So once you apply my promo code, you will get discount this. Here you will get 10% discount. And with this 10%, you have to pay 44,550. 44,550, and for 24 months you see it's 72,000. Again, if you apply my promo code, you will get 10% discount and you have to pay 64,800. Similarly, for 36 month, if you the payment is 90,000, but if you apply my promo code MDYT, you see you will get 10% discount and you have to pay 81,000. That means 10% discount you will be getting it. Then you see iconic courses. These are the benefits which you are getting in iconic courses. These are the benefits which you are getting it in iconic courses. Like for 12 months, you see for 12 months the fees is 69,500. Okay, and when you say about 69,500, if you apply my promo code, you see MDYT, you have to pay, you'll get 10% discount and you have to pay 62,550.
you have to pay 62,550. Similarly, for 24 months, if you see, you have to pay 1,07,000. But if you apply my promo code, that is MDYT, you will have to pay 96,300. And that is for same case is there for 36 month. So for 36 month you have to pay 1,41,000. But if you apply my promo code, you will get 1 lakh, you will get only 10% discount, and that is 1,26,900. So it's better that whenever you subscribe on Academy, don't forget to mention my promo code, that is MDYT. Don't forget to mention my promo code MDYT. So now, as you all know that I have already discussed about classical thinkers, we have discussed about Henry Fayol, Max Weber. So now today we are going to discuss about Mary Parker Follett. And as you know that when we discuss about Mary Parker Follett, so Mary Parker Follett, we have already discussed about the theoretical contributions, and we have already discussed about it. Also, the theoretical contribution, we have talked about constructive conflict. You can see that we have talked about constructive conflict. Then you see again we have discussed that the conflicts are of three types according to Mary Parker Follett, that is domination, compromise, and integration. Where she says integration is very tough to adopt in an organization, but it is the role of the manager to look after it. Then again, I have discussed about depersonalizing order. Depersonalizing order literally means that any order which you give, it is according to law of situation. And when I say law of situation, you see already I have discussed what is law of situation in my last lecture. And then you see she has says that when you adopt the law of situation, so with that you will adopt new methods in the organization. And the four new methods she has shared about: desirability of new methods among the member of the organization, adaptation of new method, propagations of advantage of new method among the members of organization, intensifications of the attitude of member leading towards realization of new method. And again, yesterday we have discussed about control, and I do have talked that the control mechanism, when we talk about it, the control mechanism starts with classical thinkers. The control of classical thinkers was carrot and stick method. Carrot and stick method. Carrot and stick method. That means domination was always there in their classical thinkers. But she says that we need to have fact control. In spite of having man control, we need to, and this fact control is self-regulating. Self-regulating, self-directional, and self. So fact control, yes, this is very simple to say that people should be controlled by themselves. But it is so simple to say, but it is very difficult to accept in a theoretical way. It is very difficult to accept in a theoretical way. Now you see, after discussing yesterday only, we discussed about the control mechanism. Then we are going to will be discussing about concept of coordination. You see, if you analyze it, देखिए ये सब एनालाइज करने की बात है. अगर आप एनालाइज करेंगे तो मैंने जो क्लासिकल थिंकर्स की बात की है, शास्त्रीय सिद्धांतों की बात की है, तो दिस क्लासिकल थिंकर्स दे डू गिव एम्फसाइज ऑन कोऑर्डिनेशंस. और आपको ये भी बता देते हैं कि मोने एंड रैली Mooney and Relly, they have really talked about Mooney and Relly, they have really talked about that coordination is the first principle of organization. Coordination is the first principle of organization, and as you all know that without coordinations, the success of any organization is in doubt conditions, meaningless. That is why you see when we have said, you see earlier when I just started my component with public administration, I said you earlier that human being is the most dependent animal in the world. They are the most dependent animal in the world. And whatever they try to do, they do it with the help of others. So when we say about administration, you see, when I say administration, administration means
when two or more persons combine together to accomplish the task. That means when two or more person combine together, that combine together, it literally means coordination. That combined together literally means coordination. So whenever we say that, that is why Mary Parker Follett has also accepted that yes, in an organization this principle should also exist. यानी देखो क्लासिकल थिंकर्स को इन्होंने निग्लेक्ट नहीं किया था और कोऑर्डिनेशंस को इन्होंने डाइवर्सिफाइड कर दिया. आप देखिए, अगर आप रियलाइज कीजिएगा, नाउ यू सी वी आर जस्ट, आई एम जस्ट मेकिंग यू एनालाइज दैट. यू सी टेलर. Taylor has given a concept of mental revolution. You see, Taylor has given the concept of mental revolution. ओके okay. और टेलर ने ये जो मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो दिया था, ये मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या था? देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन whom? बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉइज. सो यू सी शी हैज आल्सो सेड. तो आप देखिए कि मेरी पार्कर फॉलेट ने बस इस कोऑर्डिनेशन को डाइवर्सिफाइड किया और इसको थोड़ा सोशल पर्सपेक्टिव से बनाया, बिकॉज शी सेड दैट social aspects is dynamic in an organization, so coordination must be understood with that respect. कोऑर्डिनेशन को उस रेस्पेक्ट्स में आपको देखना चाहिए. Okay, so that is why she says that this is what we try to talk about. तो आप देखिए कि मेरी पार्कर फॉलेट ने कोऑर्डिनेशंस के बारे में कहा, तो व्हाट शी सेज, कोऑर्डिनेशंस रेफर्स टू हार्मोनियस ऑर्डरिंग ऑफ पार्ट. तो फिर टेलर ने क्या कहा? मेंटल रेवोल्यूशन, दिस इज आल्सो बोथ शुड बी हार्मोनियस. दिस आर आल्सो, अगर एम्प्लॉइज को कहें तो वो भी एक पार्ट है, मैनेजर को कहें तो वो भी एक पार्ट है. सो दीज both should be harmonious ordering. But the thing changed with Taylor and Mary Parker Follett is this, that the Taylor has given this concept of coordinations only for economic man. Concept of economic. कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन. और टेलर ने जब ये कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन उन्होंने टेलर ने दिया था, तो देखिए टेलर का मानना था कि देयर इज नो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इन, एंड दैट इज व्हाई ही क्रिटिसाइज आल्सो, बिकॉज ही ट्रीट्स मैन एज अ मशीन. बट दैट इज व्हाई शी मॉडिफाइड. यहीं पे मेरी पार्कर फॉलेट ने उसे मॉडिफाई कर दिया, कहा कि नहीं, ह्यूमन बीइंग इज नॉट कॉग इन अ मशीन. ह्यूमन बीइंग जो है वो कॉग इन अ मशीन नहीं है, वो दूसरे हैं. Human beings are different in nature, and that is why you see there is social factors also impact the productivity. ये सोशल फैक्टर्स ऑल्सो इम्पैक्ट द प्रोडक्टिव. इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सोशल फैक्टर्स हैं वो भी क्या करता है कि प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करता है. ओके, प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करता है. क्यों? क्योंकि सोशल फैक्टर से अगर आप रियलाइज करो तो कभी जब आपका मूड अच्छा रहेगा, घर से सब चीज एवरीथिंग इज ओके ना, तो आप देखिए कि उस दिन आपको काम करने में बहुत अच्छा लगेगा. काम करने में बहुत अच्छा लगेगा. Okay, so that is why the modification what she has done, she has included this, and you see how well she has included and assimilated the thinking of classical thinkers very well, and that we'll be discussing right now. क्योंकि देखिए हमारे पास थोड़ा समय जो है वो ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि we'll try to discuss this coordination as well as the thought which Mary Parker Follett has given. We'll try to discuss in a very clear manner. Now, see. So you see, she talks about coordinations. अच्छा,
कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू हार्मोनियस ऑर्डरिंग ऑफ पार्ट, यानी ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी पार्ट्स हैं उनका काफी अच्छे तरीके से आप समन्वय कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से। देयर आर फोर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल्स कोऑर्डिनेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फोर प्रिंसिपल्स है। यू सी इन एन ऑर्गेनाइजेशंस देयर एग्जिस्ट फोर प्रिंसिपल्स, और उन्होंने कहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो फोर प्रिंसिपल्स हैं, व्हाट आर दिस फोर प्रिंसिपल्स, what are these four principles, that is very important, you see। एंड अकॉर्डिंग टू हर, अब ये जो मेरी पार्कर फॉलेट ने कहा, ये उनके टाइम ही नहीं, आने वाले समय के लिए भी दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आने वाले कमिंग ईयर्स के बारे में अगर देखेंगे, तो कमिंग ईयर्स के बारे में भी यू विल सी दैट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द फर्स्ट principle what she said is this, that coordination should be reciprocal to all factors in a situations। देखिए, जब भी आप अगर बात करेंगे मेरी पार्कर फॉलेट की ना, तो डोंट फॉरगेट टू टॉक अबाउट लॉ ऑफ सिचुएशन। Got it? Is this clear to everyone? If you have any doubt, you please write in a comment box that sir, this I didn't understand. Definitely, I'll be explaining you when we'll be live. When I'll be live. Okay. So that is why when we talk about this, so first one she talks about reciprocal relation। So reciprocal का मतलब क्या होता है? What do you mean by reciprocal? रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि यू सी, यू ऑलवेज ट्राइज टू हैव इंटरैक्शन। मतलब ऐसा, रेसिप्रोकल मींस गिविंग एंड टेकिंग, गिव रेस्पेक्ट्स टेक रेस्पेक्ट्स, गिव रेस्पेक्ट्स एंड टेक रेस्पेक्ट्स। रेसिप्रोकल लिटरली मींस गिव रेस्पेक्ट, यानी रेसिप्रोसिटी ऐसा नहीं है। अभी देखिए क्या होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मली व्हाट हैपन, एज लाइक क्लासिकल थिंकर हैज सेड, दैट superior always dominate the subordinate। Superior always dominate, okay, superior always dominate in an organization। सुपीरियर जो है वो हमेशा डोमिनेट करता है सबऑर्डिनेट के ऊपर, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर एंड the classical thinkers, that is the thinking which has been given by Fayol, Gulikhalic, Monet and Raleigh, that superior उनका मानना है कि domination is from the top and the power is always from the top, और वो power fear factor से these people tries to take and do, and so there is no reciprocity। मतलब सबऑर्डिनेट उस केस में अगर आप देखें तो सबऑर्डिनेट हैज नो राइट टू से एनीथिंग टू द सुपीरियर, that his condition is good, his condition is not good, and I can't do so, these things the superior cannot say this, sorry, subordinate cannot say to superior। but here she says that the coordination should be reciprocal, यानी अगर हम किसी को काम दे रहे हैं, if I am allocating the works to anybody, okay, so in this allocation what is the best thing you will see, she says that it should be on the basis of situation। जबरदस्ती हम नहीं थोप देंगे कि हाँ आप काम कीजिए, जबरदस्ती आई कांट डू दिस। जबरदस्ती, दैट इज व्हाट शी सेड कि जबरदस्ती फोर्सफुली ये भी कर, अगर सबऑर्डिनेट कॉम्पैक्टेबल है, देखिए इससे पहले उसने क्या कहा, डिजरेबल, अगर सबऑर्डिनेट कॉम्पैक्टेबल है तो यस उसकी भी बात को सुननी जरूरी है। अब देखिए कभी कभी होता क्या है, माँ बाप क्या कहते हैं अपने बच्चों को कि बेटा ये काम कर देना, अब वो इतने डर में रहते हैं बच्चे कि वो ये नहीं कह पाते हैं कि मेरे से काम नहीं होगा, आप मेरे को दूसरा काम दीजिए।
तो ये क्या हुआ, दिस इज नॉट रेसिप्रोकल। यानी आपने सबॉर्डिनेट की बात, अपने लड़के की, बच्चों की बात नहीं सुनी और आपने उसे फोर्सफुली कह रहे हैं कि तुम ये काम करो। अब आप बताएं, कैन यू टेल मी कि फोर्सफुली अगर कोई किसी को काम कहता है, डू यू थिंक दैट दैट वर्क विद दैट द पर्सन विल डू द वर्क? नो, नॉट एट ऑल। इसीलिए दिस इज ओनली द रीजन दैट शी टॉक्स अबाउट रेसिप्रोकल। यानी अगर हम सबॉर्डिनेट को वर्क दे रहे हैं तो वी हैव टू सी, वी हैव टू थिंक अबाउट सबॉर्डिनेट दैट वेदर ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट वर्क और नॉट। अगर वो केपेबल नहीं है तो आई हैव टू आस्क व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इट। तो अब जब प्रॉब्लम उससे पूछेंगे तो वो अपनी बातें रखेगा कि सर ये प्रॉब्लम है, इसके वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, हमको क्लियर कीजिए, बहुत सारी चीजें वो बताएगा। सो जो वो ये बताएगा दैट इज कॉल्ड हिज व्यू टू द सुपीरियर। तब सुपीरियर को एहसास होगा कि दैट इज व्हाई द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट्स की प्रोग्राम्स क्यों फेल हो जाते हैं, व्हाई? बिकॉज ये ऊपर से इनके ऊपर थोपा गया है। भाई जब पॉलिसी प्रोग्राम बनती है तो आप तो सबॉर्डिनेट को पूछते ही नहीं है कि कैसा पॉलिसी बना है, उनके विचार भी तो पूछिए, और तब जाके सबको एसिमुलेट करके पॉलिसी बनाएगा, देखिए बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट होगा। आप खुद रियलाइज करें कि आप, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ अ फैमिली और आपके फैमिली मेंबर ने, बहुत लोग बैठे हैं और आपसे पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या विचार है, और आपके विचार को अगर वो इंप्लीमेंट कर लिए, अपने पॉलिसी में इंक्लूड किए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। यू जस्ट सी हाउ बेटर यू विल फील, यू योरसेल्फ विल थिंक कि यार मैंने तो बहुत अच्छा जवाब दिया, देखो मेरे को। दैट इज व्हाट शी इज सेइंग, दिस इज हाउ द मोटिवेशन ऑकर, एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन सिचुएशन। यानी कंडीशन को देखिए, ऑल फैक्टर्स इन अ सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती, सो सिचुएशंस फॉर हर, मेरी पार्कर फॉलेट इज मोस्ट, दैट इज व्हाई अब नाउ लेट अस, दिस इज द थॉट व्हिच शी हैज गिवन, दैट कोऑर्डिनेशन शुड बी रेसिप्रोकल इन ऑल द फैक्टर्स इन सिचुएशंस। बट अब आप देखिए कि when we talk about reciprocal, तो Indian government, how we do now, how the thought of coordinations related to reciprocity is important in our, कैसे important है, that is big issues Indian context में। if we talk about Indian administration, you see, if we talk about Indian administration, तो Indian administration जो है, how it is important, how it is important, you only tell me कि मेरी पार्कर फॉलोइंग तो बहुत पहले दिया था, अब रेसिप्रोसिटी को कैसे हम इसमें करें? You give, can you give me if you have any examples, you please write in the comment box, I'll see it. Okay, those who are listening. But now you tell me कि रेसिप्रोकल सीट कैसे होगा अगर इसको रिलेट करें आज के एडमिनिस्ट्रेशन से, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से। तो देखिए, अगर रेसिप्रोसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट रेसिप्रोसिटी, तो दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको हम लोग कहते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर interstate council, then we have नीति आयोग, then we have नीति आयोग। तो अब आप खुद देखिए, now you just see that these all are the platform where the reciprocity of the government can be seen, जहां पे सभी लोग को बुलाया जाता है और उनसे भी व्यूज पूछा जाता है कि दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, नाउ व्हाट्स योर व्यू? And in this regard they tries to tell about their own views. So this is what we related with the Indian administration. Okay, the second principles what she said is that coordination should be directed from both in horizontal as well as vertical level. That means you see, when she talks about vertical term or vertical level, that means she is accepting that there should be centralization.
that this should be centralization. Coordination should be directed for both horizontal and vertical level. यानी ये देखिए, this is what we say sleeping line is called horizontal. This sleeping line is horizontal and this is vertical. So she says that coordination should be like this. It should not be only from top to bottom. Yes, it should not be only from top to bottom. It should be parallel also. Like the state, for example, if you see horizontal communication, there is a zonal council. Is zonal council में states are the member and these states try to coordinate among themselves. ये स्टेट अपने में कोऑर्डिनेट करती हैं. और अगर आप बात करते हैं सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन, यू सी यू कैन गिव द एग्जांपल दैट यस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू कोऑर्डिनेट विद द स्टेट्स एंड देयर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर इट, लाइक नीति आयोग, इट्स सेंट्रलाइज्ड. वहां रेसिप्रोसिटी है तो वो सेंट्रलाइज्ड है. एंड दिस कोऑर्डिनेशन, ऑल द कोऑर्डिनेशंस आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. आप ऐसा मत समझिए कि एक अलग है तो दूसरा इससे अलग है. ऑल दीज आर वेरी मच इंटरलिंक्ड. All these are very much interlinked. And this is only the reason that this interlinking is very important in the organizations. In public administration, the interlinking is very important. So you see कि मेरी पार्कर फॉलेट ने उस समय में 19 सेंचुरीज में उन्होंने, मेरी पार्कर फॉलेट ने उस समय में ये सारी बातें कह दी थी. ओके और उन्होंने जब ये सारी बातें कह दी थी तो यू सी दैट इज व्हाई इट इज एप्लीकेबल टुडे आल्सो. और ये इतना अच्छा एप्लीकेबिलिटी इसकी है कि यू सी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेशन विल प्रॉस्पर. बट there is a problem that superior not always try to communicate with the subordinate. प्रॉब्लम ये है कि सुपीरियर हमेशा कोऑर्डिनेट करता नहीं है. सुपीरियर के, दिस इज द प्रॉब्लम दैट देयर इज रेसिप्रोसिटी की बात करें तो सुपीरियर हैज ऑलवेज इगोइज्म, एटीट्यूड, ओपिनियन दैट सबऑर्डिनेट आर only there to abide the work of superior. That is why you see unity of command and all has been given by Henry Fayol and other thinkers. उन लोग का मानना था कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट जो है वो केवल हमारा कमांड सुने, किसका? सुपीरियर का. और जब वो केवल उसका कमांड सुनेगा तो उस कमांड के ही अकॉर्डिंग वो काम करेगा. दे हैव नो राइट टू से एनी क्वेश्चंस. कमांड गिवन, you have to accept it. So you see, that is why you see Mary Parker Follett has talked about coordinations and the coordination of these. Okay, तो अब देखिए जब मेरी पार्कर फॉलेट ने इन दोनों चीजों को कह दिया है coordinations, तो coordinations, then she talks about third principles of coordinations. I hope that till now what I have explained in Mary Parker Follett is clear to everyone. Okay, and since this video lecture is only for half an hour, so what we will do, I'm going to end my lecture and again I'll be continuing this lectures tomorrow for half an hour, because this is an occasional time, means and nobody wants to listen this recorded videos. So that is why I'm making it for only half an hour, so that you people will try to listen it. And half an hour, I don't think that it will be very much. You can कहीं से भी आप half an hour time devote कर सकते हो इसमें. Okay, so that is why I am ending my class, and again you will see that after this I'll be explaining it. Okay, so now I am ending my class, and again we'll resume our class of half an hour.